Hello everyone. So then, in the last lecture, we talked about the essentials of designing for a classical play. Today, let's talk about designing for a social play. By social play, one can mean a play which talks about society, present-day politics, or the state of relationship in the present social structure. It could have a message for the public to think about and discuss. It could be talking about many things. So let's see how to work with such a play. But before that, let us watch this video. वही मेरा पहला बाकायदा इश्क हुआ, मारी विंटलर। लड़की अच्छा पियानो बजाती थी और मैं वायलिन। जुगलबंदी। जिंदगी में पहली बार मुझे कोई स्कूल पसंद आया था। वहां का खुलापन, टीचर्स की समझबूझ मुझे रास आ गई थी। मेरा आत्मविश्वास लौट आया था। मैं अपनी बात खुलकर कहने लगा। और उसके बाद ETH, वहां के मजेदार दिन रात प्यारे दोस्त, वहां मार्शल ग्रोसमान के अलावा माइकल भी मिला, माइकल एंजेलो बेसो। माइकल एंजेलो बेसो। थैंक्स टू कोपरनिकस, वरना दोस्तों हम अभी तक गलतफहमी में जीते। सूरज हमारे गिर चक्कर काट रहा होता एक गुलाम की तरह, और हम कायनात के खाली बादशाह बने रहते हैं ऐसे। बैठो। हाँ, इन लोगों ने हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक किया। क्यों अल्बर्ट? देयर इज एन इंटरेस्टिंग बुक ऑन टाइचो ब्राहे। केपलर का गुरु। केपलर सिर्फ इंटरप्रेटर था, असल काम तो ब्राहे ने किया। उस वक्त यूरोप की लेबोरेटरीज की जो हालत थी, उसे देखते हुए उसने जबरदस्त काम किया। इतना प्रिसाइज डाटा केपलर को आगे काम करने के लिए मिला। हाँ एल्बर्ट, उस वक्त यूनिवर्स की क्या बंधी बंधाई जकड़ी हुई शक्ल रही होगी ने? UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये ग्रह बेचारे कितना बंधा हुआ महसूस करते होंगे नहीं? हाँ, अचानक केपलर ने यह कहा कि मंगल गोलाकार नहीं बल्कि अंडाकार रास्ते पर सूरज के चक्कर काट रहा है। तो ये सुनकर एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या आजादी महसूस की होगी। एकदम एक नई खिड़की से खुल गई होगी। आज हमारे जीनियस बहुत चुप चुप हैं। हम लोग बहुत ही एलिमेंट्री बातें कर रहे हैं। अभी न्यूटन का जिक्र करो, फिर देखो आग लग जाएगी। मिली हो, तुम कुछ बोलो ना, मौका अच्छा है। अल्बर्ट आज चुप है। Understanding the play. You have to first understand the play and see how the director is dealing with it. Mostly, a social play is done in a realistic setup so as to give a stronger impact of what it is saying to the audience. You have to understand the subtext of the play very well. Also, one has to understand the social context and if there are any references to a particular happening. You will have to keep all these references in mind before you start your work. Let us watch this before we continue. बात नहीं बनी ना? नहीं बनी ना बात? देखा, वो मुझे पहले पता था यार, मैं पिछले से कह नहीं रहा था। पिछले ऐसा कर तू, एक गिलास ले आओ, सोडा भी। वो अपने लिए भी ले ही ले, एक दुखिया और आ गया।
स्वर्ग में देख रहे हुए तो क्या कहेंगे? ओए स्वर्ग में तो बैठी हुई हो। So, that was a scene from a social play which talks about family life and about those whose children have gone their own way in life. The grown-ups are now retired and hence the growing frustrations and differences of worldviews between the two generations. Now, first of all, we take into consideration the place and time period of the play. Then you have to find out the kind of clothes people wear in the time period. For example, if the period is the 70s in India, you will have to know that even modern working women mostly wore saris in that period, unlike today, where you find that the way of dressing up has changed. A lot of women today wear jeans, shirts, skirts, trousers, etc. So, coming back to the point, you would preferably give a sari to the female character. Of course, depending on the age too. But at the same time, you can also give Western outfits if the play demands it. The same applies to the men, whether it is kurta pajama or trousers and shirts. Let us see another video before we continue. रावण के साथ शादी हमारी, सुन लो ध्यान से। तो लड़ाई चली थी महाभारत की, वतन वास्ते कौरव पांडव जान जिगर की बाजी लगाए थे, पर ना किसी की जीत ना किसी की हार। लड़ाई तो चली थी और उसमें पंडित जोशो ने ऐलान किया कि कल की लड़ाई में अर्जुन पांडव मारा जाएगा। तौबा तौबा तौबा, जब अर्जुन मारा जाएगा तो बचेगा क्या? पर पंडित जोशो ने एक सुझाव यह भी दिया कि कल का सूरज निकलने से पहले पांडव अगर एक नर की बलि चढ़ाते तो अर्जुन बच सकता, पर शर्त ये कि जो भी नर बलि चढ़े वो पूरा नर होना जरूरी। आलम दुनिया में उस वक्त सिर्फ 3 नर ऐसे जो कि ठर्रे पूरे नर। एक खुद अर्जुन, दूसरे किशन भगवान और तीसरा अर्जुन का बेटा रावण। अब अर्जुन और किशन भगवान के बलि चढ़ने का सवाल ही नहीं था। बची बात रावण की। रावण से जब बलि चढ़ने का जिक्र किया तो उसने कहा मेरी शादी करा दो। As you've seen here, this play deals with the eunuch society, their lifestyle, customs and rituals, and also the problems they face in life, both their personal lives and in their dealings with society in general. Notice how male actors have learned to wear saris and handle them. You also see here that they have been given wigs of different kinds, a bob cut, long hair, a bun, a plait, and these are in various shades, some in greys to show the age. You may have to tell the actors how to wear the costume and how to handle it in such a kind of play. Rendering and colors and fabrics. Now, let's get back to the main point, that is designing. Now that you have seen examples of what I am talking about, let's go ahead. First of all, after you have read the play and understood it, decided upon the time and place, you go ahead with drawing the designs that you have thought of. You should try to draw in the way you want them to be worn or the way you want it to appear on a particular character. While doing this, you have to keep in mind
the size and structure of the actor you are designing for. And after drawing the sketches, you have to fill in the colors. For this, you have to decide on a color palette. This will and should depend on the graph and the mood of the play. As you have seen in the videos, you will understand that if very bright colors had been given for the play in the second video, the whole intensity and the emotional strife would be lost. Hence, the colors are deeper and softer. Also, you will notice in the third video that the colors are brighter. This is so because the play begins with festivity and rituals. But later on, some of the main characters change into more sober colors as the mood of the play shifts. So now then, let's watch one more video. आज हर सिपाही यही पूछ रहा है कौन? पकड़ के रखो हरामजादे को, वरना भाग जाएगा। क्या सोचता है? दगा देकर जा सकता है? सारी छावनी छान डाल दे। तुम्हारा हम नशीब दोस्तों, मुझे माफ कर दो। माफी का महकमा अल्लाह ताला का है। मुझसे सीधी तरह रकम की बात करो। आटा खरीदना है, वर्दी सिलवानी है, अपनी तनख्वाह से बचा कर जमा करवाते हैं तुम्हारे पास। यही पकड़कर पीटते नहीं बताएगा तो। सब पैसे सार्जेंट साहब ने लिए। क्या? हमारे पैसा उसको? रेसमन का घोड़ा हारा था तब। सारे दे डाले? उस घोड़े को वो दे देंगे, वो तो आज दे देते पत्ते नहीं। होंगे कैसे? रेस में लगाए होंगे। बाकी क्या कम खर्च होंगे? उन्हें चाहिए खिदमतगार के लिए किश्ती, धोती, आऊंगा सुकून, यही आऊंगा। और सुकून कहाँ? चल छोड़ दो सरवर, अगर होगा क्या? इससे हमारे पैसे लिए तो ये ले जाओ, कम पड़ा तो बताना, मैं और ला कर दूंगा। लेकिन इससे जो कि हमारे साथ ने इसका पैसा लिया है, और तुम्हारे कर्नल साहब क्या तुम्हारी खातिर अपने हम मुल्क कप्तान पर मुकदमा चलाएंगे? वो तुम्हें अपना समझेंगे और अपने को गैर, तो इसे क्या यूं ही छोड़ दे? हाँ जाओ। अक्लमंदी यही कहती है, एक दूसरे को निशाना बनाने के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। तुम्हें जिस चीज की जरूरत है जरूर मिलेगी। आओ मेरे साथ। सिपाहियों का मिजाज गर्म होगा ही जब उनकी रूह को मस्त किया जा रहा हो। तुम्हारा ये बांका सवार काफी संजीदा है, उसे नाना साहब से मिलना चाहिए। ये कश्मकश हुकूमत के लिए नहीं है, खुद पर इख्तियार काम करने के लिए। नाना साहब भी यही चाहते हैं, अपनी रियासत का इख्तियार। वजूद और रियासत मुख्तलिफ है, इनकार करने वाली यही एक हुकूमत है। बाजीराव का नाम तो रहना चाहिए। खुदा ने चाहा तो ऐसा ही होगा। नाना साहब का खबर पहुंचेगी तो शमसुद्दीन को वे खुद बुलवा लेंगे। उनकी खबर ऐसा हो, उन जैसे नेक शख्स के किसी काम आ सकूं, ये हमारी खुशनसीबी है। अच्छा, खुदा हाफ़िज़। Hope this video helped you to understand a bit more of what we are talking about. Now, to continue on. Now that we have the designs and the colors, you have to choose the fabrics. This must again be done keeping in mind the social structure of the play, its mood, the placement of the characters in their society, that is, their social status. Also, you have to keep the season in mind. For example, a shawl or jacket or a cardigan will go well to depict winters. Once you have purchased all the garments, be they ready-made or fabrics, you can start assembling them together. That is, you have those fabrics that need to be stitched given to the tailor and those that are ready-made arranged in sets. Do not forget the footwear. You need to decide from various designs whether to give slippers, sandals, shoes or heels, etc.
You will also need to see if you want to accessorize the actors with spectacles, jewelry, watches, etc. If yes, then you have to be very sure of the exact design and style you want them to be in. Come, let's watch one more video. तुम शुरू हो जाओ कबूतर की गर्दन से। कबूतर की गर्दन क्या चीज है? तुमने उस कबूतर को बोलते हैं रंगों की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया इतना करें। रिटायरमेंट में एक होगी। मैंने बचपन या शुरू जवानी के बाद पहली बार देखा कि कबूतर की गर्दन में अनेक रंग होते हैं। अलावा इसके तरह तरह के फूल, पत्ते, पौधे दिखे। मैं रिटायर हुआ था, वसंत था, ऋतुराज, वही तुम्हारा स्प्रिंग। क्या हवा थी, क्या लोग लगे। भाई मेरे पास इतने पैसे थे और हैं कि अगले 10-15 साल आराम से जी सकते हैं। अब इससे ज्यादा क्या जिएंगे? सारी सुरक्षा ही सुरक्षा। तुमने तो बड़ा जुगाड़ करके रखा। हमारा तो फ्लैट भी अपना है, मेरा तो फ्लैट भी किराए का है। अगर तुम समझते रहे तुम मजे लूट रहे हो। हाँ, समझता ही है यार। खैर मुझे छोड़ो। तुमने उस खिलंदड़े लड़के की कहानी पढ़ी जो स्कूल बंक करता है और जानवरों वगैरह से कहता है कि आओ मेरे साथ खेलो, मगर कोई नहीं खेलता क्योंकि सब जने अपने अपने काम में लगे होते हैं। वो हार कर वापस स्कूल चला जाता है। मेरे साथ यही दिक्कत हुई। महज वक्त बिताने के लिए मेरा लोगों से रिश्ता ही नहीं बना। बनता ही नहीं साला इस मैं अगरचे हमने रिटायर्ड लोगों का क्लब सब बनाया हुआ है। मैं कोई दूसरी नौकरी भी नहीं कर पाया। मानो उस गंदे लड़के की तरह वापस स्कूल नहीं जा। सोचा चलो कविता ही लिखते हैं। भाई तुम सोच रहे हो इस बात पर मैं पहले क्यों नहीं आया? ये कविता जब आती है तभी आती है और तभी मैं करता हूँ। नई हालत में दिक्कत ये हुई कि जितनी पहले आती थी उतनी भी नहीं आने लगी। मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा, घर की माँ, नौकरों, चाकरों, दारों को देखा। फल बच्चे वगैरह से एक नए प्रकार का संबंध हो गया। हाउस वाइफ सा हो गया। ये भी पता चला कि औरतें आमतौर पर घर की सफाई वगैरह के लिए जो चिल्लाती हैं वो क्यों चिल्लाती हैं। पर इन सबसे मैं बहुत जल्दी तंग आ गया, ऊब गया। ये सब मुझे विषयान कर लगा। मेरे अंदर हर वक्त ये बजने लगा कि मेरे पास करने को कुछ नहीं है, मेरे होने का कोई मतलब नहीं है। और इससे भी ज्यादा ये कि मेरी इस स्थिति से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, रुचि को भी नहीं। हाँ एक हद तक पड़ता है मगर भूलता नहीं। मैं मानो जिंदगी से बाहर आ गया। मैं तो यही समझता रहा यार कि रिटायरमेंट के बाद आराम से जिंदगी बसर करेंगे। मतलब जो कमाया है उसे बैठ कर धोगे। So that was an interesting video, right? So today we talked about the basics of designing for a social play and what all you should keep in mind while designing for one. In our next lecture, we will talk about costumes and makeup, of how one affects the other and how together they gave the play the visual effect required. See you soon. Bye-bye.